Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you, everyone? कैसे हो आप लोग? Anyone still has the doubt on this analysis of yesterday? Market always follows dollar companion. Okay? स्ट्रक्चरल लेआउट को फॉलो करके बने रहना. सिमिलर वे यहाँ पे S2B1 के साथ जितने भी अलोकेशंस देखे, फर्स्ट अलोकेशन पॉइंट LG होगी. सिमुलेटर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही है मूवमेंट जो कि डिमांड रेंज ऑफ मोशन के साथ फॉलो करेगा. ओके, रेंज अलोकेशन पॉइंट ऑन द ब्रेक ऑफ LG हम अलोकेशन देखेंगे फॉर एन इंटैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. जब इंटैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पे आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट? द फर्स्ट पॉइंट नोटिंग इज व्हाट इज द कंपैरिजन वैल्यू. ओके, तो इसके ऊपर लेके चलना. फॉलोड विथ सेकेंड पॉइंट रेंज, market should not redevelop the structure. रीडेवलपमेंट में नहीं आनी चाहिए, फॉलो थ्रू में विक टू विक क्रिएट करके नीचे गिरना है, राइट? देन द स्टेबिलिटी विल बी स्ट्रॉन्ग. नहीं तो मार्केट एक रेंज ब्रेक पॉइंट में आके डाइल्यूशन रीबिल्ड करेगा. सो वेट फॉर द डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर. जितने भी लोग S2B1 के साथ बैठे, एड ऑन पॉइंट विल बी अगेन the structural balance of S2B1. Okay, not prior to that. Follow this rule, be in the diversification and execution process को dilution के साथ map out में लेके आना. At the current stage, ये जो main point range bound है ना, demand follow through range, कैसे identify होगा? First point range तो हम यहाँ से लेंगे, right? Circular LG create करके drop हुआ है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पे आई है मार्केट. तो डेफिनेटली मार्केट विल डाइवर्सिफाई. कहाँ तक? डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट बना के फर्स्ट डाइल्यूशन. वन आवर का नया कैंडल क्लोज होने वाला है विद इन नेक्स्ट 4 मिनट्स. सो और एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो रिफर्बिश मूवमेंट इस रेंज में क्लोज होने दो. डिमांड 150, ब्रेक इंटैक्ट एंड ड्रॉप, नॉट प्रायर टू दैट. ओके, ये रेंज ऑफ मोशन में ही ट्रेड ऑफ अलोकेशन को फॉलो करके बने रहना. ठीक है, we'll start the analysis in 2 minutes. Whatever doubts you're having, please do comment.
and do hit a like button. And जितने भी नए लोग हैं, subscribe. Good evening, Pawan. Good evening, Samad. Good evening, Surajji. Good evening, Sayed. Diversification process 1, demand allocation, which will be rebought into the structure. Okay. Again, started self challenge from today with $25. Short with S2B1 at 4579. बहुत नीचे हो गया. Good evening, Varun.
सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आइडेंटिफाई द इंटैक्ट एंड एलजी रेंज. सेकेंड पॉइंट अलोकेशन पे होगा, ड्रॉ द अलोकेशन फॉलोइंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. उसके बाद what is the next step that we'll do? The third major step, what we'll be following at the current scenario? The third major scenario that we'll be following is volume, right? Will it be with the reversal point or the retracement point? These are the major rules that you will be following at the current stage, right? So we will follow this major steps and allocate the directional movements and sustain in the same formational point. We will not re-diversify the movement. We will not reallocate the structure. We will not re-assume the movement action plan. जब ये सब होता है, what are the few major things that we'll be taking under the consideration at the current point? The allocation of the preservance. The allocation of the preservance is looked in perspective of two range movement. What is a two range movement? A two range movement is allocated in the reserve point. अब ये रिजर्व पॉइंट कैसे काम करता है? Right? Reserve point works in two criterias. Criteria 1, वॉल्यूम को रिफाइंड मूवमेंट के साथ 100% फर्स्ट कैंडल, उसके बाद 80% रिजेक्शन फॉर द सेकेंड कैंडल. Identification, should be through the reversal point. Okay. Second, what is the second main reason? If the entire session of Asian, London, AM and PM is in Iceberg, market follows reversal action plan to 90% of the time. So at the current stage हमारे पास आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के हिसाब से वॉल्यूम 1, हाई वॉल्यूम 2, हाई वॉल्यूम 3, इस बेसिस पे हमने यहाँ पे 80% रिजेक्शन के साथ अलॉटमेंट देखा था कल के इवनिंग सेशन में 400 पिप्स की डाइल्यूशन, राइट? जो कि 400 पिप्स की डाइल्यूशन का अलॉटमेंट के साथ एस टू बी वन फॉर्मेशन दिखने को मिली है.
उसके साथ हमारे को S2B1 इंटैक की फॉर्मेशन दिखने मिली है. With that, following market has given a structure which is being allotted with LG points, right? Keeping in mind, उसके हिसाब से हमने allocation hold out किया था till minimality M1 followed with M1 200% and yesterday evening's minimality M2 followed with 150 then 200%, right? So अभी इस स्ट्रक्चर अलोकेशन के साथ हमारा मेजर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमारा मेजर एक्शन प्लान यहाँ पे री अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए. कैसे आइडेंटिफाई होगा? फर्स्ट रेंज ऑफ मूवमेंट में मार्केट यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई किया था. कहाँ पे डिप्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई किया था? At the range of movement with iceberg zone, the entire zone. First high volume derived, high volume, high volume. Comparing to yesterday's New York session, this high volume is not preformed. मतलब यहाँ पे फिर से एक रिट्रेसमेंट आएगा जहाँ पे वॉल्यूम डेवलप होगी, राइट? जब वॉल्यूम डेवलप होगा प्रोसेसमेंट में अलोकेशन हाई वॉल्यूम फॉर्मेशन दिखाएगी. जब ये हाई वॉल्यूम फॉर्मेशन दिखाएगा मार्केट विल फॉलो द डाइवर्शन प्रोसेस to revamp and re-establish the high volume range. Okay, these are the few minimum things that you will be looking for in an allocation perspective, followed with a direction control plan. तो उसके लिए what are the major things that we will be working at the current stage of an allocation? So the range is built through a movement which is surfaced with the following. How to identify the surface movement? 1 hour का allocation point as first come first serve ये role play करेगा, following with LG, right? Complete हो चुकी है. At the moment यहाँ पे at the range intact pending है, right? Diversification of the promotion pending है इस point पे, right? जब diversification pending है क्या directly market इस point का allocation लेने आएगा? Answer is no, right? So यहाँ पे market को फिर से रीडाइल्यूट करने के लिए पोजीशन बिल्ड करना पड़ेगा. Position to build, to dilute and to redirect. जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी then only we will convert this into holding. Okay, not prior to that. So this is the allocation point of 1H. If the market has to reform the position,
मार्केट यहाँ पे रिफॉर्म होने के बाद स्ट्रक्चर को रीएस्टैब्लिश करके जाना है. देन व्हाट विल मार्केट डू फर्स्ट? बताओ मार्केट पहला क्या करेगा यहाँ पे? It has to build an S2B1 intact point. Great. तो क्या ये अलोकेशन पर्सपेक्टिव जब हम अलॉट करने देखेंगे, क्या ये अलॉटमेंट हम 15 मिनट्स में देखेंगे या 1H में? 1H is nothing but 1 hour. 15 minutes first, 1 hour next. Correct. Great answers. So अभी इस प्रशुवंश में 1 hour का मेजर लिक्विडिटी चाहिए. क्या 1 hour का मेजर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है? लिक्विडिटी ग्रैब के साथ आंसर इज यस. अभी आते हैं हम 15 मिनट्स में टू आइडेंटिफाई वेदर द मार्केट हैज गिवन अ स्ट्रक्चर और नॉट. एनालिसिस के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, मार्केट हैज बिल्ट एन intact range. When the market creates an intact range followed with this point to this point, what does market follow? Market follows the range bound allocation of an S2B1 before diversifying. Okay. So at this point, this candle is indicating that movement has to come to the point of another 150 pips as a dollar companion, then convert it with 100 plus 50. Then the continuation of the movement takes place. तो add on यहाँ पे कहाँ पे होगा? Add on point will be at the range of S2B1 intact. ओके. फॉलोड थ्रू अलोकेशन हमने क्या देखा था? 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है रीडेवलपमेंट के साथ, फॉलोड विथ 150% अलोकेशन पे आ रही है. सो नेक्स्ट रेंज ऑफ मूवमेंट इज अलॉटेड ऑन द S2B1 dilution is at 4544, not prior to that. Okay, so this is the next major allocation point जो हमें देख के चलना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना इससे कम. So when we draw the allocation perspectives, what are the first major things that we'll be identifying? The first major identifying process will be redefined with the allocation of the first come first serve. यहाँ पे first come first serve demand क्या है? This point break and continue. When there is a break and continue, market क्या करेगा?
नेक्स्ट अलाइनमेंट डायरेक्टली कहाँ पे आइडेंटिफाई करता है 150% पे, राइट? सो क्या ये सस्टेनेबिलिटी दिखाया है अभी एट द करेंट स्टेज ऑन द ब्रेक ऑफ 100%? आंसर इज नो, राइट? बिकॉज ऑन द ब्रेक यहाँ पे जो 100% ब्रेक हुआ है, सिंगल कैंडल सस्टेन हुआ है, नेक्स्ट कैंडल अभी भी वो जो ब्रेक कैंडल के अंदर रीडेवलपमेंट में है, क्योंकि मार्केट में डाइल्यूशन नहीं मिला है उसे कंटिन्यू करने के लिए, राइट? तो अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें डाइल्यूशन फॉर्म होते हुए दिखती है which is at this intact range, then we can look for an add-on allocation. उससे पहले अगर एड ऑन देख रहे हो तो डेफिनेटली आप हमें पैसे दे रहे हो मार्केट में कंटिन्यूटी के लिए, राइट? सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप. जितने भी लोग अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करने आ रहे हो, ठीक है? एनी डाउट्स इन पर्सपेक्टिव ऑफ गोल्ड इन टुडेज सेशन? Good evening, sir. We are expecting this retracement till 1H LG till 4615. 4615 कौन सा है? 4564 फर्स्ट allocation point था. For the volume shows continuation. Volume hasn't shown the continuation. Good evening, Sheikh. Good evening, Nitesh. No sound. Sound तो आ रहा है मेरे हिसाब से. I didn't explain dilution at first place, Samarth. बाप रे, आप लोग क्या पोल क्या किए हो? 33%, 33%, 33%. नाइस. थोड़ा जाके पोल चेक करो कैसे अलॉट किए हो आप लोग करके.
4572 MTSL पॉइंट, इससे ज्यादा इधर नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा तो हमारा TSL विल बी द फास्टेस्ट, जो लेगा वो याद रख लेना। ठीक है, ये समझो। LG पॉइंट इन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। मार्केट यहाँ पे ओवरलोड होगी। कमेंट खोलते से ही clicked as soon as I open the comment। हाँ, अगर इसी पॉइंट से डायरेक्टली गिरता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं ये होल्डिंग में डालूंगा ही नहीं। आई विल नॉट पुट दिस इन होल्डिंग इफ इट फॉल्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली गिरेगा। नहीं, कैसे भी गिरने तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं। अगर इफ इट फॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट, this will be an intraday, not an holding trade। इंट्राडे ट्रेड होगा, होल्डिंग वाला नहीं होगा। होल्डिंग वाला चाहिए तो मेरे को यहाँ तक फिर से चाहिए, यहाँ या यहाँ। एस टू बी वन इंटैक्ट क्रिएट होना चाहिए इसी पॉइंट रेंज से। अगर से ये गिर रहा है यहाँ से ही, सो जो 84 का ट्रेड एंड 80 का ट्रेड एग्जीक्यूशन पे है, वो ट्रेड हम 400 पिप्स में डाइल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे फिर से, उतना ही। होल्डिंग के लिए अगर मेरे को स्विंग कन्वर्ट करना है इसे 4520 तक, जो कि 1H का लेवल है, राइट, इंटैक्ट पॉइंट, उस लेवल तक के लिए मेरे को यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट।
Retracement is to be even intact. Why are you saying retracement? Means you want a conversion. पहली बार 100% सही बोले हो. Without supply converted into demand for bullish markets, demand converted into supply for bearish markets, no execution is put under holding. Okay, simple rule. ये आईडी में कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा ग्रीड मत दिखाओ यहाँ पे. कमेंट खोलते से ही क्लिक हो गया. सर आज आप क्या ट्रेड सर आज आपका क्या ट्रेड रहा? एग्जीक्यूशन पॉइंट एंड थॉट प्रोसेस प्लीज शेयर. मैं सुबह जागा था बट कोई मूवमेंट नहीं था ओपन होने के बाद. सेम पॉइंट ना, कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट तो है. हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया ना मूवमेंट वेरिएशन पे. कल का ही MTSL पॉइंट अभी तक यहाँ पे है, राइट? M2 वेरिएशन के साथ मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? एग्जीक्यूशन पॉइंट 1, एग्जीक्यूशन पॉइंट 2, यहाँ पे market came back, no doubt. In this point range, LG ली setup create किया. Second add-on. With this add-on, हमको कितना चाहिए था at the first point? 400 pips कल के दिन में, correct? तो 400 pips का allocation followed with 100 pips का SL, जो कि हमने यहाँ पे place out किया था with 100 pips of SL placed into the system followed with 400 pips target. सुबह उठने तक मार्केट was at 350 range movement. ओके, ये जो रेंज में खेला है सुबह तक, दिस रेंज वाज ऑफ 350 पिप्स, राइट? सपोज दैट मार्केट कंटिन्यूएशन पे रीबाउंड क्रिएट किया, एलजी फॉर्म की, उसके साथ यहाँ पे डाइवर्जन फॉर्म आउट किया, डाइवर्जन के साथ मूवमेंट डेवलपमेंट में आई, राइट? सुरेश जी, आपका मेजर अलोकेशन पॉइंट यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई होगा? The main reason behind the identification process is clear. The identification is allotted for a swing trade holding from morning, जो आपने पूछे हो, right? वो morning allocation हमने allot किया था on basis of iceberg zone, right? And जब डॉलर कंपेनियन कंप्लीट हुई थी, हमने TP1 60% क्लोज करने बोला था ग्रुप में ना सुरेश जी. So the same rule has been followed. यहाँ पे हमारा allocation perspective 60% कवर हुआ था because 1H intact. इस 1H intact के साथ प्रोसेस को रीअलाइन करके हमने स्मॉल ट्रेड रनिंग जो कि होल्डिंग में था उसका स्मॉल ट्रेड प्लस एड ऑन पे चलाते गए. So this is the conversion on the compounding interest. कैसे कर पाओगे सुरेश जी? जब आपका क्लोजर प्रॉफिट में है, mindset is calm, right? You can hold the entire process. When you can hold the entire process, followed through first execution is closed green, right? Second execution is an add-on.
right? Third execution is an add-on. So ये add-on process में you will follow the SL range which is already in a green movement ratio. जब ये green movement ratio में form होता है, जब तक major target complete नहीं होती है, तब तक आप strong MTSL and trailing के साथ ट्रेड को रीडिफाइन करके होल्ड कर सकते हो, राइट? जैसे ही मेजर टारगेट हिट होता है, जो कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये वाला जोन था, ये वाला जोन ही क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक मेजर नाम ऐड करना भूल गया हूँ. व्हाट इज दैट नेम? सरप्लस, करेक्ट. व्हाई सरप्लस इज नॉट एडेड ओवर हियर? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे M1 है ना. उसका ब्रेक एंड कंटिन्यू मतलब इट्स एन अलोकेशन इन पर्सपेक्टिव ऑफ एन सरप्लस 100%, 150 एंड 200, राइट? अगर इस मूवमेंट में फॉलोड करते हो, देखो फर्स्ट अलोकेशन M2 150 भी आया है, फॉलोड विथ अ डाइवर्सिफाइड मूवमेंट टू M2. उसके बाद क्या मार्केट फॉलो करेगा? द एंटायर मूवमेंट? नहीं. So that is the process behind allocating the exits at this point and letting only 20% run with TSL. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सेटअप क्रिएट हुआ है तो आप शॉर्ट भी लियो. जो 20% का अलोकेशन है आउट ऑफ 4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, राइट? इस चारों पॉइंट का सिर्फ 20% हम यहाँ पे ट्रेलिंग लगाए. यहाँ पे S2B1 का शॉर्ट एग्जीक्यूशन है. मार्केट डाइवर्सिफाई हो गया इनटू हेज. जब ये हेज बिल्ड होता है, मार्केट को रिफॉर्मेशन पे आके कंप्लीशन दिखाती है, राइट? सो दैट्स व्हेन योर एंटायर डे holding will be taken into the play. Okay, so this is the process of holding power. So question from different subject. आपका क्या थॉट जिस तरीके से एक एंट्री हर जगह विनिंग करती जा रही है, वो बिना कुछ खास काम किए हुए देश में? आई थॉट कि इवन प्रोग्राम्ड है एंड आई वांट योर थॉट. वर्षा, इसको कन्वर्ट करो यार इंग्लिश में. कुछ देश का सब बात ला दिया यार. So questions from a different subjects. What are your thoughts on the way one party is winning everywhere in the country without doing anything significant? I thought that EVM is programmed. And what are your thoughts? आप elections को ला दिए इधर. Okay. Uh, I'm not that keen into politics. But एक चीज समझो. India is running on promise, not fulfillment. Now you say me, what's your thought process on this?
हम्म आप अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? एक चीज बोलता हूँ, इन्फ्लेशन को साइड में रख के बात करना। ओके, नहीं, स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये रिजेक्ट होना चाहिए, एस टू बी वन फॉर्मेशन पे आना चाहिए, तब जाके हमारा अलोकेशन रीडेवलपमेंट में आएगा, उससे पहले नहीं। एम आई क्लियर? Yesterday it formed reversal volume formation at 11 UTC, then again volume break happened at 16, it dropped 80%, so we said it will go for a retracement. And today whole day it retraced, and today at 14 again volume break happened and dropped 80% at 13. Current formation as compared to yesterday's volume. Formation is reversal or just retracement? How to identify? Good question, Nilesh. Sir, all the promises of all this are false. Yet, who is selecting them? Second question for you. नहीं नहीं, होल्डिंग में जाएगा. Definitely we will answer your question, Nilesh. Okay? Close होने से पहले आंसर होगा. Don't worry. No one in is bath with milk. Okay. Public. On what basis? Third question. नहीं नहीं, मेरा एड ऑन पॉइंट यहाँ पे होगी. यहाँ पे सब देखना सीन ही नहीं है. मेरे को कन्वर्जन चाहिए ये वाला. डिमांड कन्वर्टेड इनटू सप्लाई चाहिए मेरे को. जब तक वो नहीं मिलती है, नो एड ऑन, ओनली आईडी. ओके, प्रोसेस इज सिंपल, डोंट ओवर एग्जैचुरेट इट. On promises and dash. The dash word what you selected, is it feeding your family?
first. Second, are they paying you the money? Third, in your difficult times, are they coming to you to save you? Fourth, whatever you are earning in perspective of whatever slab is gone to them, is it helping you? If I showed interest, if I showed interest, मेरे को एक चीज बताओ, what will I gain? Give me this one note to follow. People are selecting them, but the problem is that if want to change the, then it is difficult because they have captured every as per the way it is running in the country. You have the answers. Your gains is zero. So why should I follow? Hype, savage, and no harm, nothing, everything. 112, 756,000 monthly expenditure, which was of this number, has converted into this number, where it used to go with in perspective of, now it is at flat, right? जिनको पता है उनको पता है ये क्या है नंबर जो मैं लिख रहा हूँ. Yet, no doubt, the good things done. मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Your answers are here. I follow this. I follow this. Yes, it is feeding people.
but with knowledge. Mm. But what is you talking about is feeling. Okay. Have you ever seen anyone speak about growth? Ever, ever? No. Then why? Hence, I don't follow. जैसे हमें चाहिए वैसे बिल्ड हुआ है. इस पॉइंट ऑफ एक्शन से अभी इस पॉइंट तक की सफर. Journey is needed. Huh? Then only we can convert it into hold. गुड इवनिंग अब्दुल, कैसे हो? हाउ इज शारजा? इफेक्ट हुआ है क्या वॉर की वजह से वहां पे? 3 week setup on 15 minutes is being formed, guide please. Sure. 3 week only seen in 1x. No, we do see in 15 minutes. But at the right point, as per the volumes only we check, not against it. Patel and Abdul, both of you. ठीक है? What is this conversion is formed near 4545? Were they in 15 minutes intact point? 4545. 4545. Which conversion are you talking about? Guys, this channel is only for learning. Why are you hedging now? Follow the promptimentary setup allocation, no? Why you want to go against it? Against क्यों जाना चाहते हो आप लोग? जितने भी नए लोग हैं, like, share, and subscribe. Old members, like दबा दो. Things are muddy, not in a good state in Middle East overall. Yeah, I know about Dubai and all, but just wanted to check. Hope you are all fine. No, verification allocation के साथ चलो ना. 4555 पे शॉर्ट किया हो. भाई चिल्ला चिल्ला के बोला हो. कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन चाहिए करके.
किस पॉइंट, किस के हिसाब से आप शॉर्ट किए, वो बताओ जनाब। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, यहाँ तक हम हैड ऑन नहीं देख रहे। सर एक चैनल में बोला है कि शॉर्ट करो, यहाँ से 1000 पिप की डाउनफॉल आएगी, तो यहाँ पे क्यों पूछ रहे हो? बिना इंटैक्ट, बिना डाइल्यूशन, बिना फ्लो अरेंजमेंट, हाउ विल मार्केट फॉल? जहां पे भी बोला है ये क्वेश्चन उधर पूछो। ओके, इंटैक्ट मत ऐड करना, डाइल्यूशन के बदले में लिक्विडिटी बोल देना, ठीक है? कॉमन सेंस, उसके लिए बोलता हूँ सीखो पहला। 4555 पे शॉर्ट किया है तुमसे। अगर रनिंग में एंट्री लिया है तो मैं खुद बता दूंगा ना, कल के जैसा दिल पे हाथ रख के एक ट्रेड ले आए करके, समझ जाओ आप। यहाँ पे वैसे कुछ बोला ही नहीं हो, मैं खुद वेट कर रहा हूँ यहाँ तक एड ऑन के लिए। Any other doubts you guys are having, guys? Please do ask. उसको जाके बोलो 4555 से जितने भी लोगों को शॉर्ट कराया ना, 250 पिप्स प्लस एसएल है उनका, 250 पिप्स ऊपर आएगी मार्केट। सिग्नल शुड बी फाइन। ट्रू। एंड आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, बता दो जल्दी। It will be bullish, it will be bearish, it will refurbish on dilution। अच्छा, refurbish on dilution किसी को पता ही नहीं है तो डाला है क्यों है? चेंज करो उस टैग को, अभी चेंज भी नहीं होगा। नहीं, वो चैप्टर अभी कंप्लीट ही नहीं किया है। ओके, हमारे टीम के गलती की वजह से वन न्यू अपडेट फॉर टुडे। Refurbished on the dilution। What does this mean? चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा because it's there in the poll, I am answering you। Okay, whichever direction market is trending, market redistributes the structure, followed for an allocation, to diversify the dollar company।
ये है इसका मतलब, ठीक है। And we will look on to this process when we are literally using that formation. Till that, this is just a knowledge. Sir, please tell in Kannada. So refurbished of dilution ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್, ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಗೆ ರಿವರ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಅದು. ಹೆಂಗ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರದು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಧರಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, I will have to say one thing. The market moves from where the voice comes. किसकी वॉइस हो रहा है? Thank you everyone for watching. Hope you guys are enjoying the learnings. थोड़ा सा knowledge दिया हो शायद. Hope that is utilized on your trading journey.
But thank you for watching, everyone. Appreciate it. Sir, example when we'll do that topic, not prior to that. Okay. Oh, farm to rose. वर्षा, कनेक्ट दिस स्क्रीनिंग जो लिख रहा हो वो आईटी टीम के साथ कनेक्ट करो जल्दी. इसे अलॉट करने बोलना चार्ट में. ओके. ಡಾಲರ್ ಕಂಪಾನಿಯನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. There was someone who hedged. What will you do now, Samarth? Hedge position at 4557. Right? That's the reason I always say you to process follow Madi. Do the process following. Allocations needs to be taken under the considerations with the setup only. You took a good short trade, but why did you hedge in between?
Was there any setup? No. Was there any S2B1 intact? No. Was there any allocation point which was diversifying the rejection? No. Yes, definitely conversion was there. So if you take the conversion allocation also, you will tend to give the money to the market. Prefer to hold the trades which is giving you good return on investments. जहाँ पे भी मार्केट अलोकेशन पर्सपेक्टिव 150 पिप्स के ऊपर है तब देखो. हाँ, you exited, that is a second scenario, but you did take, right? I was asking the reason behind it. Dollar, dollar companion ಇರಬೇಕು, compression ಅಲ್ವಾ. So where is the setup, Samar? Assumptions is good, but where is the setup? One, no intact. Two, no S2B1 formation. Three, no indication. Four, conversion movement of 150 pips. 5, diversification allocation नहीं था. So these are the major steps which you didn't take in the play. So if you do this, definitely you will blow whatever challenge you have started again. Right? $25. If you have execution is beautiful, but bit lower side over here, you took at 79, somewhere here. Right? What is the SL range? The SL range is directly 150 pips. Where is S2B1? S2B1 is here. Right? Henceforth, the allocation will be in perspective of the setup only if you are doing a challenge. Don't run through every trade. Wait before execution. There are rules that needs to be followed always. Sir, namaskara, ನೀವು Bangalore. No. I can speak Kannada, but I am not a Bangalorean. By Surya. Correct. I'll always ask myself and check this point this 9 seconds.
in this game, you will miss trades. FOMO will control. You can overcome this only through one way: patience and wait. And ये जो setup है execution के लिए, this is not for one person, this is for everyone. For beginners. Okay. So now let's understand the conversion point and volume allocation of Nilesh and Anurag. So this is an iceberg zone. Volume has created one high volume, 80% rejection. Normal terms, reversal. Same iceberg zone. Market has created a high volume, second high volume, third high volume, fourth high volume, and fourth high volume is below 80%. Normal norms is retracement. Allocation point. If this is formed in the market, retracement only. If this is formed in the market, reversal till TTS 2.2. Now, if this point of action is played with one high volume and the next 1 hour candle with 80% break, here comes the rule coordinates. What is rule coordinates? Market needs to form conversion. Anurag, right? So allocation perspectives, supply retracement will convert into demand retracement. This will be the last supply which will get converted to first demand. Okay. This is in perspective of bullish markets. Okay. Similar way, demand converted into supply. Last demand of the bullish movement to the first retracement of the supply movement. This when are looking for a bearish reversal. Okay. How does the allocation work at this point?
एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, ओके, allocation of a preservance is looked on to a change in segment. मतलब मार्केट अगर कोच क्रिएट कर रहा है उसके बाद कन्वर्जन आ रही है, प्रोबेबिलिटी 80%, राइट। सिमिलर वे में बिना कोच का रिट्रेसमेंट फॉर्म हो रहा है, possibility of a movement when the market is creating conversion before the coach. Win rate 95+%, राइट। तो प्रेसिडेंस को अलोकेट करके डायरेक्शन में बना रहना यहाँ पे कन्वर्जन मदद करती है, ओके। तो ये अलोकेशन पॉइंट्स को रेक्टिफाई करना होता है। That's when the allocation of conversion takes place. Okay. एलजी क्रिएट हुआ है मार्केट में, यस, एलजी क्रिएट हुआ है मार्केट में। ऑडियो क्लियर, वीडियो लैग, इधर तो ठीक चल रहा है। अगर सर्वर इशू होता मेरा तो मैं जो लिख रहा हूँ शेकी शेकी होता, शकला का बम बम। एक बार रिफ्रेश कर लेना जिनका भी लैग हो रहा है उनके लिए। Sir, while explaining, you observed LG point. Observation is the most important crucial skill what you need to have. कोई भी पॉइंट ऑफ एक्शन, कोई भी अलोकेशन, कोई भी प्रिजर्वेंस का डायरेक्शन पे बैठते हो तब रेंज ऑफ मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जर्वेशन ऑफ एन आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ऑब्जर्वेशन ऑफ एन आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मार्केट के ऊपर ध्यान रखे हो, जब कुछ भी काम कर रहे हो, that's when you will win most of the times.
Any other doubts you guys are having? Please do ask. जितने भी नए लोग हैं, what are we doing here? We are allocating the structures जो कि रिजर्वेंस के हिसाब से रीडायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को आइडेंटिफाई करता है एंड राइट डायरेक्शन पॉइंट को रिफर्व करके कंटिन्यूटी में रखता है। एंट्री एग्जीक्यूशन पॉइंट्स हम S2B1 इंटैक्ट फॉलो करता है। लिक्विडिटी प्रोसेस वॉल्यूम 1 आवर के हिसाब से डाइल्यूशन को हम 15 मिनट्स के हिसाब से इंटैक्ट तक होल्ड करता है। दिस इज द नॉर्मल नॉर्म्स ऑफ व्हाट वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ में नहीं आया, बने रहो, सीखो। ट्रेड से प्लीज एक एरो बटन दिख रहा होगा बैक का, दबाओ, यू कैन गो बैक टू द प्लेस वेयर यू आर ट्रेडिंग। सीखो, लर्न फर्स्ट देन यू अर्न। अर्निंग इज लाइफ टाइम, learning is also lifetime, but the starting 80% of the learning is one time. After that, the 20% of the learning is renovating the process. उस चीज को समझना। Whenever you learn to renovate the process in the directions which is utilized on a regular basis for a lifetime, there is tweaks which we need to do. That is the learning progress of 20% out of 100%. 80% remains the same. ओके और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल्यूम अलोकेशन पर्सपेक्टिव का मेन रीजन क्या होना चाहिए? अलोकेटिंग द मेजर प्लान हमारा रेंज मोशन में होना चाहिए। रिवर्सल के लिए अलोकेशन पॉइंट एट 80%, रिट्रेसमेंट के लिए 100% है वॉल्यूम, सेकेंड थर्ड फोर्थ न्यूज नहीं है तो थर्ड या फोर्थ में ही आ जाएगा 80% अलोकेशन पॉइंट, उसी के साथ कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट, राइट। रूल कोऑर्डिनेट मार्केट कैसे करता है कन्वर्जन के लिए? सप्लाई से डिमांड को कन्वर्ट करना है बुलिश मार्केट में, तो लास्ट सप्लाई जो है बुलिश मूवमेंट में वो कन्वर्ट होगा फर्स्ट डिमांड पे। ओके, सिमिलर वे बेरिश मार्केट में क्या होगा? जो भी लास्ट डिमांड है बुलिश मार्केट में वो होगा फर्स्ट सप्लाई बेरिश मार्केट में। सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोल दिया, ये बुलिश नहीं बेरिश मार्केट है, ठीक है। नीचे से ऊपर जब जा रहा है तब कन्वर्जन सप्लाई टू डिमांड होना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस। अलोकेशन प्रोबेबिलिटी कब आपके फेवर में होगी? जब बिना कोच का मार्केट रिट्रेसमेंट फॉर्म करता है, दैट्स व्हेन मार्केट 95% ऑफ द टाइम अलोकेशन डायरेक्शन पे देगा कंप्लीट इंटैक्ट तक, राइट। कोच के साथ कन्वर्ट करता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे 80% का ही प्रोबेबिलिटी के साथ डाइवर्सिफाई होगा, ठीक है। दिस आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू नोट जब भी एक मूवमेंट को अलोकेट करके डायरेक्शन पे बने हो। लॉन्ग पे हो शॉर्ट पे हो, शॉर्ट पे है एड ऑन के लिए हम 4575 4580 का रेंज में फिर से आने का वेट कर रहे हैं। 50% क्लोज हो चुका है, 50% रनिंग में है, बिकॉज जिस अलोकेशन पॉइंट में हमें रिजेक्शन चाहिए था उस अलोकेशन पॉइंट में हमें वो रिजेक्शन मिल चुकी है। henceforth we are waiting। अभी क्लियर है पटेल? जो भी समझ रहे थे वो समझ गए अभी?
अनुराग पॉइंट कन्वर्जन क्लियर हो गया? नीलेश योर वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ, सॉल्व तो नहीं हुआ है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होगा, प्रोसेस में रहेगा। जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं लेते क्या सर? आंसर फॉर श्रेयस 100% नो ट्रेड। I will break the rule of not following the setup when I know my dilution point is completed. जैसे कल किया था ना श्रेयस, सेम वे। Till then, no direct entries. कल का रीजन क्या था एग्जीक्यूशन का? जितने भी लोग लिक्विडिटी स्वीप करके बैठे, जितने भी लोग ब्रेक डाउन करके बैठे, जितने भी लोगों का अलोकेशन पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड था, सबको डाइल्यूट किया, करेक्ट? दैट्स द रीजन वी टुक दिस ट्रेड कॉन्फिडेंटली। एड ऑन यहाँ पे हुआ, इंटैक्ट पे यहाँ पे हुआ। उसके बाद अगर नोटिस कर रहे हो, इस मोमेंट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो कि एड ऑन पॉइंट था। क्यों नहीं हुआ? LG नो S2B1, सो होल्ड। मूवमेंट डेवलपमेंट नेक्स्ट कहाँ पे मिला? डॉलर कंपेनियन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट? Followed with the movement, no trade, no trade, no trade, because I wasn't there in front of the system. बाद में एनालिसिस कहाँ पे शेयर हुई? ट्रेड कंप्लीशन के बाद S2B1। एड ऑन के लिए मेरे को ये पॉइंट चाहिए so that I can hold it in swing. Else I am not interested in swing. कंडीशन 1 इंटैक्ट है, ठीक है? कंडीशन 2 कन्वर्जन नहीं हुआ, हेंस 3 एड ऑन उसी पॉइंट में ही होगा। नॉट प्रायर टू दैट, ठीक है? Everyone, one thing you have to follow, everything and everywhere. You won't get trades. So wait for setups for add-ons.
So, sir, as you explained, volume formation yesterday, it formed both the formations one after another. So, in that case, we'll skip the formation and consider the second. हाँ, फर्स्ट फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए था कल के दिन में? कल के दिन में हमारा सेटअप फॉर्मेशन क्या थी? आइसबर्ग जोन, हाई वॉल्यूम, सेकेंड हाई वॉल्यूम, थर्ड हाई वॉल्यूम, 80%. रिट्रेसमेंट का था, करेक्ट? तो यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के दिन में क्या बना था? 400 पिप्स का ही बना था ना, जो कि सुबह में आ गया. द मूवमेंट केम इनटू एशियन सेशन. व्हेन इट केम अंडर एशियन सेशन, the allocation will be in perspective of Asian. न्यूयॉर्क पीएम सेशन का allocation नहीं देखेंगे हम यहाँ पे तब. New day, new allocation, new stability, new movement action plan is formed. तभी जाके एक मूवमेंट को allocation के हिसाब से रेंज में लेके चलता है. एशियन सेशन में आज के दिन क्या किया पूरा दिन? 1 आवर में देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा, पूरा आइसबर्ग जोन में था, करेक्ट? So henceforth, the trade was in hold. Is cleared. Yes, sir. 10:30 पर भी कन्वर्जन है ना, वो कल देखेंगे बेटा. प्रूफ दिखाओ. लाइव मार्केट में कोई भी बोल सकता है मूवमेंट खत्म होने के बाद कि बेरिश मूवमेंट में हम बैठे हैं. प्रूफ के चक्कर में बहुत सारे लोग गए. आप कहाँ से आ गए? चलो, आपको भी संतुष्ट कर देते हैं. अभी आप बोल रहे हो शॉर्ट लेने के लिए. मैंने कब बोला भाई शॉर्ट लेने के लिए? डोंट पुट ब्लेम गेम्स विथ मी, नॉर प्ले ब्लेम गेम्स विथ मी, ओके? मेरा एड ऑन पॉइंट 4575 4580 प्लस कन्वर्जन पॉइंट में है करके बोला हो. मेरा शॉर्ट ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है जो कि 50% क्लोज्ड है, 50% ट्रेलिंग के साथ चल रहा है करके बोला हो. रिवाइंड करके चेक कर लेना. जो वादा देते जो बोलते उसको निभाते हैं हम, ठीक है? एंड ये देख लो, तुम्हारा जो डाउट है, 8:06, सॉरी 4 मिनट में शेयर किया था मिनिमलिटी M2 200%. और क्लैरिटी चाहिए? M2 M2 4584 4584. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट? कुछ भी बोलते हो यार. एंड लॉन्ग ट्रेड का एग्जिट करने बोले हम 470 पिप्स पे. क्या बात कर रहे हो? कुछ भी. एंड उतना डाउट है लॉन्ग का ट्रेड का, देख ले. S2B1 इंटैक्ट, LG पॉइंट, ये देख लियो. मूवमेंट, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, याद है.
Any other doubts you guys are having, please do ask. Stream will be there for next 10 minutes. तो तुम्हारे हिसाब से मार्केट ऊपर आएगा, ट्रेड कहाँ पे लेना है भाई? छोड़ दे, तू बैक दबा, जा, जहाँ पे ट्रेड मिलता है वहां पे जा. What's your rise for signals? Answer for your question. It's free. If you understand what I say. Okay? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इधर इंटैक्ट है, यहाँ से ऐड ऑन मेरा शॉर्ट के लिए है. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ guys? हाँ, ट्रेड देता हूँ जब फेस्टिवल आता है, उस दिन ट्रेड देता हूँ, उतना ही. वो छोड़ के कभी नहीं. आज तक 2 ही ट्रेड दिया है. एक दिवाली के लिए दिया था, एक होली के लिए दिया था, एक संक्रांति के लिए दिया था. सॉरी, 3 दिया था ना. कोई नहीं. हिट द लाइक बटन गाइस, एंड जितने भी नए लोग हैं, सब्सक्राइब दबा देना. ऐसे ही नए कंटेंट आते रहेंगे डे टू डे बेसिस पे. जो भी डाउट है पूछ लो. फिर ट्रेड नहीं, लर्निंग देते हैं भाई. थैंक यू भाई, आप बोलने के लिए. मेरे को ये समझ में नहीं आया, 150 लोग देखे, ठीक है, 150 लोगों को जो देखे है ना, उनमें से सिर्फ 20 लोग हैं जो लर्निंग चाहिए, दूसरों को सब टिप्स चाहिए. नाइस. ग्लोबल मार्केट सही बोला था. नया न्यूज़ आया है, जाके देखना. ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट सेज investments have failed because of tips. If they focus on learning, the growth is mandatory. ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बोला है. पब्लिक डेटा है, देख सकते हो. यू कैन रीड ऑन दिस. कब लॉन्च हुआ था? वुमेन्स डे कब था? मई 1 ना, मई 1 को लॉन्च हुआ रिपोर्ट. Living thought. Welcome to the stream. What's your name, brother? Yeah, sister.
सर शॉर्ट में हूँ, क्या करूँ, कहाँ से हो शॉर्ट? 4553 भाई। बीबी सिर्फ 70 पिप्स गया है मार्केट में, नेगेटिव चल रही है। 200 पिप्स नेगेटिव देने से अच्छा है छोटा सा और एक रिट्रेसमेंट आएगा 30-40 पिप का, उसमें एग्जिट कर दियो। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज एकदम लगा कि कोई लेक्चर में बैठा हूं मैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? पॉलिश्ड गुड्स। आप हर एक यूट्यूब चैनल में ज्यादा स्पैम करते हो क्या? नहीं, आप हमारा स्पैम लिस्ट में आपका मैसेज दिखा है, ना कि लाइव पे, उसके लिए देखा, पूछा। बुरा मत मानना। 1 बार तो लाइव में दिखा दे यार। हर बार लाइव स्ट्रीम क्लोज होने के बाद मूवमेंट आता है, बट हमारे डायरेक्शन में ही आता है, वो अलग सिनेरियो है। 15 मिनट्स चार्ट कब यूज करते हैं? क्लोजिंग टाइम में पूछ लिया, कोई नहीं। श्रेयस, आपका प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। 1, डेली टाइम फ्रेम intact and LG points first. Second, 4H intact points only. Third, 1H intact and LG point. Fourth, 15 minutes intact and LG points. Followed with basic supply and demand. Okay. Color combination as per our daily time frame purple, confuse ना होने के लिए 4 hours gray,
1 hour blue, 15 minutes red for demand, green for supply. This is your first implementation process for this week. इसे master करो पहला. Then we will look for next. Okay. फिफ्टीन मिनट्स के नीचे देखोगे नहीं किसी भी हाल में. Getting my point? एंड जितने भी बिगिनर्स है सेम रूल को फॉलो कर सकते हो. नो चेंज नीडेड. Yes, this will be the entire basic structure. वन मिनट में ट्रेड करके दिखाओ जनाब. ये जो ट्रेड है आप 1 मिनट में खोलोगे मेरा चार्ट फट के नीचे आ जाएगी. ओके. सो नहीं खोल पाऊंगा. Sir, I was watching your previous 30 minutes back. You were doing PRD on some app. Yes. So are you a developer? No, I'm not a developer. I can do multiple things. I can cook. I can create. I can write. I can build. I can drive. ILDs. I can bake charts. I can print. M. I can compound M. I can flip M. अभी के लिए इतना काफी है आज के लिए शायद. This much I can cook. What is ILDs?
रोड इलीगल व्हीकल सुपर फास्ट। हाँ वही तो बोला ना इधर, आई कैन बेक चार्ट्स। वही तो ड्रॉ किया था। इतना लैग क्यों होता है, समझा नहीं। इधर लैग नहीं होता है बिकॉज जैसे ही फर्स्ट मैसेज हमने देखा लैग के बारे में, पवन जैन ने जो लिखा था, राइट, वी ओपन द लाइव स्ट्रीमिंग हियर इटसेल्फ, एक बार भी लैग नहीं हुआ। उसके लिए आई हैव इग्नोर्ड ऑल द लैग क्वेश्चंस सो फार। नीलेश ने पूछा, पटेल ने पूछा, पवन जैन ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा। डोंट वरी, विल फिक्स दैट आल्सो। बिकॉज अगर सर्वर इशू के हिसाब से लैग होता तो ये जो लिख रहा हूँ ना वो ऐसे होती, एक वर्ड इधर एक वर्ड इधर ऐसा आता। कल जो हुआ ना डॉक्टर हैंड राइटिंग, वो सिनेरियो यहाँ पे होती। तो अभी भी स्ट्रीम चल रही है। प्रूफ। हे सिरी, राइट हेलो एवरीवन इन यूट्यूब चैट। नहीं नहीं, कभी कभी यूज करता है यार, वो फोन टेबल पे रहता है तो ऐसे यूज के लिए यूज कर लेता हूँ। ओके यार, एक मुंह तो दे दे। गोल्ड चार्ट ने ठान लिया है कि वो मूवमेंट तभी देगा जब मैं बंद करूंगा। सर बीटीसी, बीटीसी चल रहा है, चलने में कल से करता है बीटीसी भी एनालिसिस। ठीक है, बीटीसी में द मेजर टाइम फ्रेम आप लोगों को फॉलो करना है 1 आवर, 4 आवर्स डेली टाइम फ्रेम, उसके नीचे आओ ही मत। 1 आवर त्रिशूल फॉर्मेशन, 1 आवर S2B1 फॉर्मेशन, 1 आवर सप्लाई एंड डिमांड, 4 आवर dilution and diversification, daily time frame intact, BTC। ओके, कल से स्टार्ट करेंगे BTC में। गुड इवनिंग आर्य, कैसे हो? क्लोजिंग टाइम पे आ गए हो? ओके, all the new members, beginners, whichever formulation, strategy, allocations you guys are following doesn't bother to me, nor it should be bothering to you.
right? 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis come with a small capital compounded following proper risk to reward. While following a proper risk to reward, make sure to remove fear, greed, and FOMO while executing the trades. It's your hard earned money. Don't give it to manhandle, nor follow any tips. Learn before you earn. Right? One good trade is a trade executed with your mindset, your learnings, your patience, your execution at the right point following the setups, removing fear, greed, and FOMO with following a proper risk to rewards. Compounding will give you wealth, but not followed, it could blow your account too. So, follow the risk to rewards. Winnings will give you happiness, losses will give you learnings. Don't repeat the same mistake for more than 3 times. It's a business. So, in the new mistakes, don't repeat it for the 3 times more and continue holding the moments. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय. Thank you everyone.